will be repositioned to act as a catalyst for the rural economy. Details are at Annexure C. India Post will also be transformed as a large public logistics organization. This will meet the rising needs of Vishwakarmas, new entrepreneurs, women, self-help groups, MSMEs, and the large business organizations. Our government will provide support to NCDC for its lending operations for the cooperative sector. MSMEs as the second engine. Now I move to MSMEs as the second engine, which encompasses manufacturing and services with a focus on MSMEs numbering 5.7 crores. Currently, over 1 crore registered MSMEs, employing 7.5 crore people and generating 36% of our manufacturing, have come together to position India as a global manufacturing hub. With their quality products, these MSMEs are responsible for 45% of our exports. To help them achieve higher efficiencies of scale, technological upgradation, and better access to capital, the investment and turnover limits for classification of all MSMEs will be enhanced to 2.5 and 2 times respectively. This will give them the confidence to grow and generate employment for our youth. The details are given in Annexure D. To improve access to credit, the credit guarantee cover will be enhanced. First, for micro and small enterprises from 5 crore to 10 crore rupees, leading to additional credit of 1.5 lakh crores in the next 5 years. Second, for startups from 10 crore rupees to 20 crore rupees, with the guarantee fee being moderated to 1% for loans in 27 focus sectors which are important for Atmanirbhar Bharat. And for well-run exporter MSMEs, for term loans up to 20 crore rupees. Also for the micro enterprises, we will introduce customized credit cards with a 5 lakh rupee limit for micro enterprises registered on Udyam portal. In the first year, 10 lakh such cards will be issued. Fund of funds for startups. The Alternate Investment Fund, AIFs, for startups have received commitments of more than 91,000 crores rupees. These are supported by the fund of funds set up with the Government of India's contribution of 10,000 crore rupees. Now, a new fund of funds with expanded scope and a fresh contribution of another 10,000 crore rupees will be set up. A new scheme will be launched for 5 lakh women, scheduled castes and scheduled tribes, first-time entrepreneurs. This will provide term loans up to 2 crore rupees during the next 5 years. The scheme will incorporate lessons from the successful Stand Up India scheme. Online capacity building for entrepreneurship and managerial skills will also be organized. Measures for labor-intensive sectors. To promote employment and entrepreneurship opportunities in labor-intensive sectors, our government will undertake specific policy and facilitation measures. To enhance the productivity, quality, and competitiveness of India's footwear and leather sector, a focused product scheme will be implemented. The scheme will support design capacity, component manufacturing, and machinery required for production of non-leather quality footwear, besides the support for leather footwear and products. The scheme is expected to facilitate employment for 22 lakh persons, generate over 4 lakh crore rupees
and exports of over 1.1 lakh crore rupees. Measures for the toys sector. Building on the National Action Plan for Toys, we will implement a scheme to make India a global hub for toys. The scheme will focus on development of clusters, skills, and a manufacturing ecosystem that will create high-quality, unique, innovative, and sustainable toys that will represent the Made in India brand. Support for food processing. In line with our commitment towards Purvodaya, we will establish a National Institute of Food Technology, Entrepreneurship, and Management in Bihar. The institute will provide a strong fillip to food processing activities in the entire eastern region. This will result in 1. Enhanced income for the farmers through value addition to their produce, and 2. Skilling entrepreneurship and employment opportunities for the youth. Manufacturing mission, furthering Make in India. Our government will set up a national manufacturing mission covering small, medium, and large industries for furthering Make in India by providing policy support, execution roadmaps, governance, and monitoring framework for central ministries and states. Details are in Annexure E. Given our commitment to climate-friendly development, the mission will also support clean tech manufacturing. This will aim to improve domestic value addition and build our ecosystem for solar PV cells, EV batteries, motors and controllers, electrolyzers, wind turbines, very high voltage transmission equipment, and grid-scale batteries. Investment as the third engine. Now I move to investment as the third engine, which encompasses investing in people, investing in the economy, and investing in innovation. Investing in people. Saksham Anganwadi and Poshan 2.0. Saksham Anganwadi and Poshan 2.0 program provides nutritional support to more than 8 crore children, 1 crore pregnant women and lactating mothers all over the country, and about 20 lakh adolescent girls in aspirational districts and the Northeast region. The cost norms for these nutritional support will be enhanced appropriately. Atal Tinkering Labs. 50,000 Atal Tinkering Labs will be set up in government schools in the next 5 years to cultivate the spirit of curiosity and innovation and foster a scientific temper among young minds. Broadband connectivity to government secondary schools and PHCs. Broadband connectivity will be provided to all government secondary schools and primary health centers in rural areas under the BharatNet project. Bharatiya Bhasha Pustak Scheme. We propose to implement a Bharatiya Bhasha Pustak scheme to provide digital form Indian language books for schools and for higher education. This aims to help students understand their subjects better and in their language. National Centers of Excellence for Skilling. Building on the initiative announced in the July 24 budget, 5 national centers of excellence for skilling will be set up with global expertise and partnerships to equip our youth with the skills required for Make for India, Make for the World manufacturing. The partnership will cover curriculum design, training of trainers, and a skills certification framework and periodic reviews. Expansion of capacity in IITs. Total number of students in 23 IITs has increased 100% from 65,000 to 1.35 lakh in the past 10 years.
Additional infrastructure will be created in the 5 IITs started after 2014 to facilitate education for 6,500 more students. Hostel and other infrastructure capacity at IIT Patna will also be expanded. Center of Excellence. Center of Excellence in AI for Education. I had announced 3 centers of excellence in artificial intelligence for agriculture, health, and sustainable cities in 2023. Now a center of excellence in artificial intelligence for education will be set up with a total outlay of 500 crores. Expansion of medical education. Our government has added almost 1.1 lakh undergraduate and postgraduate medical education seats in 10 years, an increase of 130%. In the next year, 10,000 additional seats will be added in medical colleges and hospitals towards the goal of adding 75,000 seats in the next 5 years. Daycare cancer centers in all district hospitals. Our government will facilitate setting up of daycare cancer centers in all district hospitals in the next 3 years. 200 centers will be established in 25-26 itself. Strengthening urban livelihoods. Our government has been giving priority to assisting urban poor and vulnerable groups. A scheme for socio-economic upliftment of urban workers will be implemented to help them improve their incomes, have sustainable livelihoods, and a better quality of life. PM Swanidhi scheme has benefited more than 68 lakh street vendors, giving them respite from high-interest informal sector loans. Building on this success, the scheme will be revamped with enhanced loans from banks, UPI-linked credit cards with 30,000 rupees limit, and capacity building support. Social Security Scheme for welfare of online platform workers. Gig workers of online platforms provide great dynamism to the new age services economy. Recognizing their contribution, our government will arrange for their identity cards and registration on the e-Shram portal. They will be provided health care under PM Jan Arogya Yojana. This measure is likely to assist nearly 1 crore gig workers. Investing in the economy. Public-private partnership in infrastructure. Each infrastructure-related ministry will come up with a 3-year pipeline of projects that can be implemented in PPP mode. States will also be encouraged to do so and can seek support from the India Infrastructure Project Development Fund, which is a scheme to prepare support to states for infrastructure. An outlay of 1.5 lakh crore is proposed for the 50-year interest-free loans to states for capital expenditure and incentives for reforms. Building on the success of the first asset monetization plan announced in 2021, the second plan for 2025 to 30 will be launched to plow back capital of 10 lakh crore in new projects. Regulatory and fiscal measures will be fine-tuned to support the plan. Jal Jeevan Mission. Since 2019, 15 crore households, representing 80% of India's rural population, have been provided access to portable tap water connections. To achieve 100% coverage, I am pleased to announce
the extension of this mission until 2028 with an enhanced total outlay. The mission's focus will be on the quality of infrastructure and O&M of rural piped water supply schemes through Jan Bhagidari. A separate MOU or separate MOUs will be signed with the states and union territories to ensure sustainability and citizen-centric water services delivery. Urban sector reforms. Building on the July budget proposals, urban sector reforms related to governance, municipal services, urban land and planning will be incentivized. Urban Challenge Fund. The government will set up an Urban Challenge Fund of 1 lakh crore rupees to implement the proposals for cities as growth hubs, creative redevelopment of cities, and for water and sanitation purposes announced in the July budget. This fund will finance up to 25% of the cost of bankable projects, with a stipulation that at least 50% of the cost is funded from bonds, bank loans, and PPPs. An allocation of 10,000 crore is proposed in 2025-26. Power sector reforms. We will incentivize electricity distribution reforms and augmentation of intra-state transmission capacity by states. This will improve financial health and capacity of electricity companies. Additional borrowing of 0.5% of GSDP will be allowed to states contingent on these reforms. Nuclear energy mission for Vikasit Bharat. Development of at least 100 gigawatt of nuclear energy by 2047 is essential for our energy transition efforts. For an active partnership with the private sector towards this goal, amendments to the Atomic Energy Act and the Civil Liability for Nuclear Damage Act will be taken up. A nuclear energy mission for research and development of small modular reactors with an outlay of 20,000 crore will be set up. At least 5 indigenously developed small modular reactors will be operationalized by 2033. Shipbuilding. The shipbuilding financial assistance policy will be revamped to address cost disadvantages. This will also include credit notes for shipbreaking in Indian yards to promote the circular economy. Large ships above a specified size will be included in the infrastructure harmonized master list. Shipbuilding clusters will be facilitated to increase the range, categories, and capacity of ships. This will include additional infrastructure, facilities, skilling, and technology to develop the entire ecosystem. Maritime Development Fund. For long-term financing for the maritime industry, a Maritime Development Fund with a corpus of 25,000 crore rupees will be set up. This will be for distributed support and promoting competition. This will have up to 49% contribution by the government, and the balance will be mobilized from ports and from private sector. UDAN regional connectivity schemes. UDAN has enabled 1.5 crore middle-class people to meet their aspirations for speedier travel. The scheme has connected 88 airports, and operationalized 619 routes. Inspired by that success, a modified UDAN scheme will be launched to enhance regional connectivity to 120 new destinations and carry 4 crore passengers in the next 10 years.
4 crore additional passengers in the next 10 years. The scheme will also support helipads and smaller airports in hilly, aspirational and northeast regional districts. Greenfield airports will be facilitated in Bihar to meet the future needs of the state. These will be in addition to the expansion of the capacity of Patna Airport and a brownfield airport in Beta. Western Kosi Canal project in Mithilanchal. Financial support will be provided for the Western Kosi Canal ERM project, benefiting a large number of farmers, cultivating over 50,000 hectares of land in the Mithilanchal region of Bihar. Mining sector reforms. Mining sector reforms, including those for minor minerals, will be encouraged through sharing of best practices and institutions of a state mining index. A policy for recovery of critical minerals from tailings will be brought out. Under the special window for affordable and mid-income housing, SWAMI, 50,000 dwelling units in stressed housing projects have been completed and keys handed over to home buyers. Another 40,000 units will be completed in 2025, further helping middle-class families who are paying EMIs on loans taken for apartments while also paying rent for their current dwellings. Building on this success, SWAMI Fund 2 will be established as a blended finance facility with contribution from the government, banks and private investors. This fund of 15,000 crore rupees will aim for expeditious completion of another 1 lakh units. PM Gati Shakti data for private sector. For furthering PPPs and assisting the private sector in project planning, access to relevant data and maps from the PM Gati Shakti portal will be provided. Tourism for employment-led growth. Top 50 tourist destination sites in the country will be developed in partnership with states through a challenge mode. Land for building key infrastructure will have to be provided by the states. Hotels in these destinations will be included in the infrastructure harmonized list. The following measures will be taken for facilitating employment-led growth. Organizing intensive skill development programs for our youth, including in institutes of hospitality management. Providing mudra loans for homestays. Improving ease of travel and connectivity to tourist destinations. Providing performance-linked incentives to states for effective destination management, including tourist amenities, cleanliness, and marketing efforts. And introducing streamlined e-visa facilities along with visa fee waivers for certain tourist groups. Continuing with the emphasis on places of spiritual and religious significance, in the July budget, there will be a special focus on destinations related to the life and times of Lord Buddha. Medical tourism and heal in India. Medical tourism and heal in India will be promoted in partnership with the private sector, along with capacity building and easier visa norms. Investing in innovation. To implement private sector-driven research, development, and innovation initiatives announced in the July budget, I am now allocating 20,000 crore rupees for this purpose.
A deep tech fund of funds will also be explored to catalyze the next generation startups as a part of this initiative. In the next 5 years, under the PM Research Fellowship Scheme, we will provide 10,000 fellowships for technological research in IITs and IISc with enhanced financial support. The second gene bank with 10 lakh germplasm lines will be set up for future food and nutritional security. This will provide conservation support to both public and private sectors for genetic resources. We will start a national geospatial mission to develop foundational geospatial infrastructure and data. Using PM Gati Shakti, this mission will facilitate modernization of land records, urban planning, and design of infrastructure projects. A Gyan Bharatam mission for survey, documentation, and conservation of our manuscript heritage with academic institutions, museums, libraries, and private collectors will be undertaken to cover more than 1 crore manuscripts. We will set up a national digital repository of Indian knowledge systems for knowledge sharing. Now I move to exports as the fourth engine. We will set up an export promotion mission with sectoral and ministerial targets driven jointly by the Ministries of Commerce, MSME, and Finance. It will facilitate easy access to export credit, cross-border factoring support, support to MSMEs to tackle non-tariff measures in overseas markets. A digital public infrastructure, Bharat Trade Net, for international trade will be set up as a unified platform for trade documentation and financing solutions. This will complement the Unified Logistics Interface platform. The BTN will be aligned with international practices. Support will be provided to develop domestic manufacturing capacities for our economy's integration with global supply chains. Sectors will be identified based on objective criteria. Facilitation groups with participation of senior officers and industry representatives will be formed for select products and supply chains. Through this, there are huge opportunities related to Industry 4.0, which needs high skills and talent. Our youth have both. Our government will support the domestic electronic equipment industry to leverage this opportunity for the benefit of our youth. A national framework will be formulated as guidance to states for promoting global capability centers in emerging Tier 2 cities. This will suggest measures for enhancing availability of talent and infrastructure, building bylaw reforms, and mechanisms for collaboration with industry. Our government will facilitate upgradation of infrastructure and warehousing for air cargo, including high-value perishable horticultural produce. Cargo screening and customs protocol will be streamlined and made user-friendly. Reforms as the fuel. Over the past 10 years, our government has implemented several reforms for convenience of taxpayers, such as faceless assessment, 2, taxpayer charter, 3, faster returns, 4, almost 99% returns being on self-assessment, and 5, Vivad Se Vishwas scheme. Continuing these efforts, I reaffirm the commitment of the Tax Department to trust first, scrutinize later. I also propose to introduce the new income tax bill next week.
I will detail the indirect tax reforms and changes in direct taxes in Part B. Financial sector reforms. The FDI limit for the insurance sector will be raised from 74 to 100%. This enhanced limit will be available for those companies which invest the entire premium in India. The current guardrails and conditionalities associated with foreign investment will be reviewed and simplified. The services of India Post Payment Bank will be deepened and expanded in rural areas. NABFID will set up a partial credit enhancement facility for corporate bonds for infrastructure. Public sector banks will develop Grameen Credit Score framework to serve the credit needs of SHG members and people in rural areas. A forum for regulatory coordination and development of pension products will be set up. To implement the earlier announcement on simplifying the KYC processes, the revamped Central KYC Registry will be rolled out in 2025. We will also implement a streamlined system for periodic updating. Requirements and procedures for speedy approval of company mergers will be rationalized. The scope for fast-track mergers will also be widened and the process made simpler. As proposed in the interim budget, we signed bilateral investment treaties with 2 countries in 2024 to encourage sustained foreign investment, and in the spirit of First Develop India, the current model BIT will be revamped and made more investor-friendly. In the last 10 years, in several aspects, including financial and non-financial, our government has demonstrated a steadfast commitment to ease of doing business. We are determined to ensure that our regulations must keep up with technological innovations and global policy developments. A light-touch regulatory framework based on principles and trust will unleash productivity and employment. Through this framework, we will update regulations that were made under old laws. To develop this modern, flexible, people-friendly, and trust-based regulatory framework appropriate for the 21st century, I propose 4 specific measures. A high-level committee for regulatory reforms will be set up for a review of all non-financial sector regulations, certifications, licenses, and permissions. The committee will be expected to make recommendations within a year. The objective is to strengthen trust-based economic governance and take transformational measures to enhance ease of doing business, especially in matters of inspection and compliances. States will be encouraged to join in this endeavor. An investment friendliness index of states will be launched in 2025 to further the spirit of competitive, cooperative federalism. Under the Financial Stability and Development Council, a mechanism will be set up to evaluate impact of the current financial regulations and subsidiary instructions. It will also formulate a framework to enhance their responsiveness and development of the financial sector. In the Jan Vishwas Act 2023, more than 180 legal provisions were decriminalized. Our government will now bring up the Jan Vishwas Bill 2.0 to decriminalize more than 100 provisions in various laws. I now move to fiscal policy. In the July budget, I had committed to staying the course for fiscal consolidation. Our endeavor will be to keep the fiscal deficit each year such that central government debt remains on a declining path as a percentage of the GDP. The roadmap for the next 6 years has been detailed
in the FRBM statement. Revised estimates for 2024-25. The revised estimate of the total receipts other than borrowings is 31.47 lakh crore rupees, of which the net tax receipts are 25.57 lakh crore rupees. The revised estimate of the total expenditure is 47.16 lakh crore rupees, of which the capital expenditure is about 10.18 lakh crore rupees. The revised estimate of the fiscal deficit is 4.8% of the GDP. Budget estimates for 25-26. Coming to 25-26, the total receipts other than borrowings and total expenditure are estimated at 34.96 lakh crore rupees and 50.65 lakh crore rupees respectively. The net tax receipts are estimated at 28.37 lakh crore rupees. The fiscal deficit is estimated to be 4.4% of GDP. To finance the fiscal deficit, the net market borrowings from dated securities are estimated at 11.54 lakh crore. The balance financing is expected to come from small savings and other sources. The gross market borrowings are estimated at 14.82 lakh crore rupees. I will now move to Part B. Indirect taxes. My proposals relating to customs aim to rationalize tariff structure and address duty inversion. These will also support domestic manufacturing and value addition, promote exports, facilitate trade, and provide relief to common people. Rationalization of customs tariff structure for industrial goods. As a part of comprehensive review of customs rate structure announced in July 2024 budget, I propose to 1. Remove 7 tariff rates. This is over and above the 7 tariff rates removed in 23-24 budget. After this, there will be only 8 remaining tariff rates, including 0 rate. 2. Apply appropriate cess to broadly maintain effective duty incidence, except on a few items where such incidence will reduce marginally. 3. Levy not more than 1 cess or surcharge. Therefore, I propose to exempt social welfare surcharge on 82 tariff lines that are subject to a cess. I shall now take up sector-specific proposals. To provide relief to patients, particularly those suffering from cancer, rare diseases, and other severe chronic diseases, I propose to add 36 life-saving drugs and medicines to the list of medicines fully exempted from basic custom duty. I also propose to add 6 life-saving medicines to the list attracting concessional custom duty of 5%. Full exemption and concessional duty will also respectively apply on the bulk drugs for manufacture of the above. Specified drugs and medicines under patient assistance programs run by the pharmaceutical companies are fully exempt from BCD, provided the medicines are supplied free of cost to the patients. I propose to add 37 more medicines along with 13 new patient assistance programs. Support to domestic manufacturing and value addition. Critical minerals. In the July 2024 budget, I had fully exempted BCD on 25 critical minerals that are not domestically available. I had also reduced BCD of 2 other such minerals to provide a major fillip to their processing, especially by MSMEs. Now, I propose to fully exempt cobalt powder and waste,
the scrap of lithium-ion battery, lead, zinc, and 12 more critical minerals. This will help secure the availability for manufacturing in India and promote more jobs for our youth. To promote domestic production of technical textile products such as agro-textiles, medical textiles, and geotextiles at competitive prices, I propose to add 2 more types of shuttle-less looms to the list of fully exempted textile machinery. I also propose to revise the BCD rate on knitted fabrics covered by 9 tariff lines from 10 or 20 to 20% or 115 rupees per kg, whichever is higher. Electronic goods. In line with our Make in India policy and to rectify inverted duty structure, I propose to increase the BCD on interactive flat panel display from 10% to 20% and reduce the BCD to 5% on open cell and other components. In 23-24 budget, for the manufacture of open cells of LCD, LED TVs, I had reduced the BCD on parts of open cells from 5% to 2.5%. To further boost the manufacture of such open cells, the BCD on these parts will now stand exempted. Lithium-ion battery. To the list of exempted capital goods, I propose to add 35 additional capital goods for EV battery manufacturing and 28 additional capital goods for mobile phone battery manufacturing. This will boost domestic manufacture of lithium-ion batteries, both for mobile phones and for electric vehicles. Shipping sector. Considering that shipbuilding has a long gestation period, I propose to continue the exemption of BCD on raw materials, components, consumables, or parts for the manufacture of ships for another 10 years. I also propose the same dispensation for shipbreaking to make it more competitive. Telecommunication. To prevent classification disputes, I propose to reduce the BCD from 20% to 10% on carrier-grade Ethernet switches to make it at par with non-carrier-grade Ethernet switches. Export promotion. To facilitate exports of handicrafts, I propose to extend the time period for export from 6 months to 1 year, further extendable by another 3 months if required. I also propose to add 9 items to the list of duty-free inputs. Leather sector. I propose to fully exempt BCD on wet blue leather to facilitate imports for domestic value addition and employment. I also propose to exempt crust leather from 20% export duty to facilitate exports by small tanners. Marine products. To enhance India's competitiveness in the global seafood market, I propose to reduce BCD from 30% to 5% on frozen fish paste, surimi, for manufacture and export of its analog products. I also propose to reduce BCD from 15% to 5% on fish hydrolysates for manufacture of fish and shrimp feed. In July 2024 budget, to promote development of domestic MROs for aircraft and ships, I had extended the time limit for export of foreign origin goods that were imported for repairs from 6 months to 1 year and further extendable by 1 year. I now propose to extend the same dispensation for railway goods. Time limit for provisional assessment. Presently, the Customs Act 1962 does not provide any time limit to finalize provisional assessments, leading to uncertainty and cost to trade. As a measure of promoting ease of doing business, I propose to fix a time limit of 2 years, extendable by a year,
for finalizing the provisional assessment. I propose to introduce a new provision that will enable importers or exporters, after clearance of goods, to voluntarily declare material facts and pay duty with interest but without penalty. This will incentivize voluntary compliance. However, this will not apply in cases where department has already initiated audit or investigation proceedings. For industry to better plan their imports, I propose to extend the time limit for the end use of imported inputs in the relevant rules from 6 months to 1 year. This will provide operational flexibility in view of cost and uncertainty of supply. Further, such importers will now have to file only quarterly statements instead of a monthly statement. I now come to my direct tax proposals. In Part A, I have briefly underlined taxation reforms as one of key reforms to realize our vision of Vikasit Bharat. In respect of criminal law, our government had earlier ushered in Bharatiya Nyaya Sanhita, replacing Bharatiya Danda Sanhita. I am happy to inform this august House and the country that for new income tax bill will carry forward the same spirit of Nyaya in its drafting as well. The new bill will be clear and direct in text, with close to half of the present law in terms of both chapters and words. It will be simple to understand for taxpayers and tax administrators, leading to tax certainty and reduced litigation. Reforms, however, are not a destination. They are means to achieve good governance for our people and economy. Providing good governance primarily involves being responsive. The Tirukural captures this in verse 542, which reads, "Vaanokki vaazhum ulagallam, mannavan kol nokki vaazhum kudi," meaning, just as the living beings live expecting rains, citizens live expecting good governance. Our government is committed to keeping an ear to the ground and a finger on the pulse and responding while balancing our national building efforts. The following measures will detail just how our government will, under the guidance of PM Modi, has taken steps to understand and address. I repeat that sentence, sir. The following measures will detail just how our government, under the guidance of PM Modi, has taken steps to understand and address the needs voiced by our citizens. My tax proposals are guided by this spirit. The objectives of my proposals are as follows. Personal income tax reforms with special focus on middle class. Rationalization of TDS and TCS for easing difficulties. Encouraging voluntary compliance. Reducing compliance burden. Ease of doing business, employment and investment. I will come to my proposal on personal income tax towards the end. TDS and TCS, rationalization for easing difficulties. I propose to rationalize tax deduction at source, TDS, by reducing the number of rates and thresholds above which TDS is deducted. Further, threshold amounts for tax deduction will be increased for better clarity and uniformity. The limit for tax deduction on interest for senior citizens is being doubled from the present 50,000 rupees to 1 lakh rupees. Similarly, the annual limit of 2.40 lakh rupees for TDS on rent is being increased to 6 lakh rupees.
This will reduce the number of transactions liable to TDS, thus benefiting small taxpayers receiving small payments. The threshold to collect tax at source, the TCS, on remittances under RBI's liberalized remittance scheme, the LRS, is proposed to be increased from 7 lakh to 10 lakhs. I also propose to remove TCS on remittances for education purposes, where such remittances is out of a loan taken from a specified financial institution. Both TDS and TCS are being applied on any transaction related to sale of goods. To prevent such compliance difficulties, I propose to omit the TCS. I also propose that the provisions of the higher TDS deduction will now apply only in non-PAN cases. In July 2024, the delay for payment of TDS up to the due date of filing statement was decriminalized. I propose to provide the same relaxation to TCS provisions as well. The government under the leadership of Prime Minister Modi believes in Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas. In line with this, we brought in updated return facility in 2022 for voluntary compliance by taxpayers who had omitted to report their correct income. Our trust in taxpayers was proved right. Nearly 90 lakh taxpayers voluntarily updated their incomes by paying additional tax. Taking this trust further, I now propose to extend the time limit to file updated returns for any assessment year from the current limit of 2 years to 4 years. I propose to reduce the compliance burden for small charitable trusts and institutions by increasing their period of registration from 5 years to 10 years. It is also proposed that disproportionate consequences do not arise for minor defaults such as incomplete applications filed by charitable entities. Presently, taxpayers can claim the annual value of self-occupied properties as nil only on the fulfillment of certain conditions. Considering the difficulties faced by taxpayers, it is proposed to allow the benefit of 2 such self-occupied properties without any condition. To streamline the process of transfer pricing and to provide an alternative to yearly examination, I propose to introduce a scheme for determining arm's length price of international transaction for a block period of 3 years. This will be in line with global best practices. With a view to reduce litigation and provide certainty in international taxation, the scope of safe harbor rules is being expanded. A number of senior and very senior citizens have very old national savings schemes accounts. As interest is no longer payable on such accounts, I propose to exempt withdrawals made from NSS by individuals on or after 29th August 2024. I am also proposing to allow similar treatment to NPS Vatsalya accounts as is available to normal NPS accounts subject to overall limits. In my speech in July 2024, I had promised that all processes, including giving effect to appellate orders, shall be digitalized and made paperless over the next 2 years. So I'm happy to announce that digitalization is being made operational now. In July 2024, we brought in the Vivad Se Vishwas scheme to resolve income tax disputes pending in appeal. The scheme has received a great response, with nearly 33,000 taxpayers having availed of the scheme to settle their disputes. I have a few proposals to promote investment and employment.
It is proposed to provide a presumptive taxation regime for non-residents who provide services to a resident company that is establishing or operating an electronics manufacturing facility. I further propose to introduce a safe harbor for tax certainty for non-residents who store components for supply to specified electronics manufacturing units. Presently, the tonnage tax scheme is available only to sea-going ships. The benefits of existing tonnage tax scheme are proposed to be extended to inland vessels registered under the Indian Vessels Act 2021 to promote inland water transport in the country. Extension for incorporation of startups. We continue to support the Indian startup ecosystem. I propose to extend the period of incorporation by 5 years to allow the benefit available to startups which are incorporated before 1/4/2030. In order to attract and promote additional activities in the IFSC, I am inter alia proposing specific benefits to ship leasing units, insurance offices, and treasury centers of global companies which are set up in IFSC. Further, to claim benefits, the cut-off date for commencement in IFSC has also been extended by 5 years to 31/3/2030. Category 1 and Category 2 AIFs are undertaking investments in infrastructure and other such sectors. I propose to provide certainty of taxation to these entities on the gains from securities, to promote funding from sovereign wealth funds and pension funds to the infrastructure sector. I propose to extend the date of making an investment by 5 more years up to 31st March 2030. Personal income tax reforms with special focus on middle class. Democracy, demography, and demand are the key support pillars in our journey towards Vikasit Bharat. The middle class provides strength for India's growth. This government, under the leadership of Prime Minister Modi, has always believed in the admirable energy and ability of the middle class in nation building. In recognition of their contribution, we have periodically reduced their tax burden. Right after 2014, the nil tax slab was raised to 2.5 lakhs of rupees, which was further raised to 5 lakh rupees in 2019 and to 7 lakh rupees in 2023. This is reflective of our government's trust on the middle class taxpayers. I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. So, average income of 1 lakh per month, other than the special rate income such as capital gains, under the new regime. This limit will be 12.75 lakh for salaried taxpayers due to the standard deduction of 75,000. Slabs and rates are being changed across the board to benefit all taxpayers. The new structure will substantially reduce the taxes of the middle class and leave more money in their hands, boosting household consumption, savings, and investment. In the new tax regime, I propose to revise tax rate structures as follows: 0 to 4 lakh rupees nil, 4.8 lakh rupees to 4 to 8 lakh rupees 5%,
8 to 12 lakh rupees 10%, 12 to 16 lakh rupees 15%, 16 to 20 lakh rupees 20%, 20 to 24 lakh rupees 25%, and above 24 lakh rupees 30%. To taxpayers up to 12 lakh of normal income other than special rate income such as capital gains. I read that again. To taxpayers up to 12 lakh of income other than special rate income such as capital gains, tax rebate is being provided in addition to the benefit due to slab rate reduction in such a manner that there is no tax payable by them. The total tax benefit of slab rate changes and rebate at different income levels can be illustrated with a few examples. A taxpayer in the new regime with an income of 12 lakh rupees will get a benefit of 80,000 rupees in tax, which is 100% of tax payable as per the existing rates. A person having income of 18 lakh rupees will get a benefit of 70,000 rupees in tax, that is 30% of tax payable as per existing rates. A person with an income of 25 lakh gets a benefit of 1,10,000 rupees, that is 25% of his tax payable as per existing rates. Details of my tax proposals are given in the annexure. As a result of these proposals, Honorable Speaker, sir, revenue of about 1 lakh crore in direct taxes and 2,600 crores in indirect taxes will be foregone. Mr. Speaker, sir, with this, I commend the budget to this august House. तो देखिए, फाइनेंस मिनिस्टर ने जो सबसे बड़ा बजूका था वो एकदम एंड तक बचा के रखा, और अब हमारे न्यूज़ रूम में बहुत चीयर हुआ होगा, मैं कह सकता हूँ इस चीज़ को लेकर, क्योंकि 12 लाख तक के इनकम पर कोई टैक्स नहीं है, और अगर आप न्यू टैक्स रजीम में आ जाएंगे तो 75,000 रुपये उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन और जोड़ लीजिए तो 12,75,000 रुपये तक उसमें कोई टैक्स नहीं होगा न्यू रजीम में, ध्यान रखिएगा। और ये उनके लिए जो स्पेशली अगर कैपिटल गेंस के अलावा जो एक नॉर्मल सैलरी इनकम है उस पर ये बात हो रही है। उसके अलावा जो 2-3 बड़े स्टेप्स लिए गए, अब देखिए, आप फिस्कल डेफिसिट का जो टारगेट है उसको FY25 के लिए 4.9% से घटाकर 4.8% पर लाया गया, FY26 के लिए 4.5% से घटाकर 4.4% पर लाया गया। कैपेक्स का नंबर जो पिछले साल जिसको 11.1 लाख करोड़ रखा गया था उसको 10.8 लाख करोड़ पर ला दिया गया, लेकिन वो आप कह सकते हो कि नंबर है आपके पास और जनवरी तक का कैपेक्स आपके पास होगा, और अगले साल का जो कैपेक्स नंबर है उसको 10.8 लाख करोड़ पर रखा गया, जो शायद मार्केट के लिए थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है। आई थिंक मार्केट इतने शानदार टैक्स प्रपोजल के बाद भी अगर नहीं चलाए तो उसका शायद कुछ लेना देना उस कैपेक्स नंबर से होगा, क्योंकि उसकी भी शायद थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन थी कि थोड़ा सा अगर वो बढ़ जाए तो मार्केट के लिए पॉजिटिव होता वो। और बाकी बजट में काफ़ी कुछ इम्पॉर्टेंट सब आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। और एक और इम्पॉर्टेंट नंबर मैं बताना चाहता हूँ हमारे पूरे के पूरे पैनल को, हमारे सारे के सारे गेस्ट को, CNBC आवाज़ इस पूरी बजट स्पीच के दौरान नंबर 1 चैनल है यूट्यूब पर। 5 लाख लाइव व्यूअर्स CNBC आवाज़ पर हैं, जो किसी भी जनरल न्यूज़ चैनल, किसी भी बिजनेस न्यूज़ चैनल, किसी भी हिंदी चैनल, किसी भी इंग्लिश चैनल से एटलीस्ट 2 टाइम्स ज़्यादा हैं। जी हाँ, देखिए, हम एक चीज़ बताऊं मैं आपको, हम हर हफ्ते एक ढिंढोरा नहीं पीटते हैं, लेकिन बजट जैसा दिन एक दिन होता है जिसमें ये मैटर करता है कि कौन से चैनल को आप सुन रहे हैं। और CNBC आवाज़ अपनी क्रेडिबिलिटी की वजह से आज सबसे ज़्यादा जो नंबर है वो आपके ही चैनल के साथ है। हमारे साथ हमारी बजट जूरी तैयार है, उनसे फटाफट व्यू लेते हैं। नीलेश भाई, बताइए क्या होगा पहला वर्डिक्ट? बजट काफ़ी अच्छा आया है। जो हमने उम्मीदें लगा के रखी थी कि फिस्कल प्रूडेंस का पाथ मत छोड़ना, 4.4% तो उम्मीद से भी ज़्यादा आगे है। दूसरा कहा था अर्बन कंजम्पशन को बढ़ावा देना, सपोर्ट देना, तो टैक्स की रियायतें उसको सपोर्ट करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना, वहाँ पे इस साल थोड़ा नंबर्स कम आए हैं, 11,11,000 करोड़ के सामने तकरीबन 10,18,000 करोड़ बताया है,
तो उसके ऊपर शायद अगले साल बेस बड़ा होगा। ओके, थोड़ा सा आई थिंक नीलेश भाई के ऑडियो में थोड़ा सा इशू आ रहा है। नीलेश भाई मैं आ रहा हूँ आपके पास, थोड़ा ऑडियो में इशू आ रहा है, उसको हम सॉर्ट आउट कर रहे हैं। आपके पास वापस आ रहा हूँ। सुनील सिंघानिया भी जुड़े हैं हमारे साथ, एबेकस एसेट मैनेजर के फाउंडर हैं सुनील जी। सुनील जी, गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच बजट पर जुड़ने के लिए हमारे साथ। मार्केट तो खैर काफ़ी वोलेटाइल है, बहुत कुछ कहा फाइनेंस मिनिस्टर ने। जो दो बड़ी हाईलाइट थी, एक तो कैपेक्स नंबर और एक जो इनकम टैक्स पर जो बड़ा डिसीजन लिया गया है, आप कैसे रिएक्ट करेंगे? आई थिंक बजट जो एक्सपेक्टेड था उसी के लाइन पे है। थिंक जो की मैसेजेस हैं कि फिस्कल प्रूडेंस पे फोकस रहेगा, ग्रोथ की तरफ फोकस रहेगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, लेस कंप्लायंस की तरफ फोकस रहेगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट मिडिल क्लास की तरफ फोकस रहेगा। तो आई थिंक सब चीज को एड्रेस किया है। ऑब्वियसली वी स्टिल हैव टू सी द फाइन प्रिंट, लेकिन अक्रॉस द बोर्ड टैक्स में रिलीफ है। तो जो 12 लाख की आमदनी वालों को 80,000 की रिलीफ है, आई थिंक बहुत ही अच्छी रिलीफ है। एक थोड़ा है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा 11 लाख करोड़ का होना था वो 10 ही लाख हुआ है। मे बी इस टाइम इलेक्शन के वजह से सब कुछ डिफर हो गया। बट गुड थिंग इज दैट कि वो पाथ बरकरार है। तो मेरे हिसाब से ये क्वार्टर में और अगले साल बहुत धूम से कैपिटल एक्सपेंडिचर पे खर्चा होगा। और ये सब करते हुए भी जैसे 1 लाख करोड़ का डायरेक्ट टैक्स में रेवेन्यू फोरगो किया है, फिर भी फिस्कल प्रूडेंस की तरफ क्लियर एक मैनेज किया हुआ है। 4.4% दिस ईयर, और फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि 6 साल तक लोअर फिस्कल डेफिसिट की तरफ देश बढ़ेगा। आई थिंक ऑल इन ऑल वेरी डिसेंट बजट। तो फिर सुनील सर, कैसे देखें मार्केट को? यहाँ से क्या मार्केट अब जिस हिसाब से पोजीशन है वापस एक रैली की तरफ बढ़ेगा या फिर ऑलरेडी एक रैली हो चुकी है? अनुज जी, ना हमने देखा है बजट के इमीडिएटली बाद में इमीडिएट व्यू लेना मार्केट पे बहुत ही मानी 10 में से 9 जन रॉन्ग आते हैं। तो आई थिंक लेट अस सी द फाइन प्रिंट। बट आई थिंक मार्केट ऑलरेडी एक चैलेंजिंग मोड पे था। लास्ट 4-5 दिन में मार्केट ने थोड़ा सा रिकवरी किया है। आई थिंक मार्केट को चाहिए कि देश में ग्रोथ और कॉर्पोरेट अर्निंग्स में ग्रोथ, उसकी तरफ क्लैरिटी आए। और वो हो सकता है कि मार्च के क्वार्टर के आसपास वो क्लैरिटी आनी शुरू हो जाए कि भाई ग्रोथ बरकरार है। बट बजट से इस ग्रोथ को थोड़ा सा पुश ही मिला है। इट्स नॉट अ हेडविंड, इट्स अ टेलविंड। तो आई थिंक उसको देखते हुए मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट होके थोड़ा सा पॉजिटिवनेस की तरफ ही जाना चाहिए। बिल्कुल, देखिए एक सेक्टर जहां पर वीरो बहुत शानदार रैली आ रही है वो है एफएमसीजी, क्योंकि इसका मतलब बहुत क्लियर है, लोग जाएंगे और कंज्यूम करेंगे। एक बार निफ्टी एफएमसीजी देखिए और एक बार निफ्टी ऑटो भी दिखा दीजिए जरा लगे हाथ, वो भी देख लेते हैं। निफ्टी एफएमसीजी करीब 2.5% ऊपर और निफ्टी ऑटो ये देखिए 1.5% ऊपर। नीलेश भाई, क्लियरली सरकार ने बोला है कि टैक्स कट कर रहे हैं, अब प्लीज़ जाइए कंज्यूम करिए। और सबसे पहले लोग ज़्यादातर या तो गाड़ी खरीदते हैं या फिर बाहर जाकर ईट आउट करते हैं। मतलब एफएमसीजी और ऑटो सबसे शानदार रैली यहीं पर आ रही है। सबसे ज़्यादा यही सेक्टर गिरे थे पिछले अर्निंग सीजन के बाद। नीलेश भाई, तो डेफिनेटली इस वक्त अर्बन कंजम्पशन को बढ़ावा देने के लिए जो टैक्स में रियायत दी गई है वो ज्यादातर लोग खर्चा करेंगे उसका। एंड रोटी कपड़ा मकान तो सबका हो रहा है, तो खर्चा एजुकेशन, ट्रैवल, टूरिज्म, कंज्यूमर ड्यूरेबल, ये सारी चीज पे होगा। एंड मार्केट इसी उम्मीद में कंजम्पशन एंड ऑटो स्टॉक्स को बढ़ावा दे रहा है। नीलेश भाई मनी मन चाह रहे होंगे 2 SIP और बढ़ जाए आदमी की, है ना, वो भी अच्छा रहेगा है। सौरभ, आपका व्यू बजट पे पहला रिएक्शन? देखिए, मेरे ख्याल से काफ़ी गेम चेंजिंग बजट है। आई थिंक सुनील सिंघानिया जो ऑलरेडी कमेंट कर रहे थे कैपेक्स के नंबर पे, मेरे अनुमान से ये पहला बजट है 5 साल में यहाँ पे कैपेक्स ग्रोथ का आंकड़ा 10-11% आया है, शायद उससे थोड़ा कम भी आया हो, राइट। पहली बार, क्योंकि लास्ट 5 साल में कैगार रहा है कैपेक्स पे खर्चा का 30%, तो काफ़ी मीनिंगफुल डायरेक्शन चेंज है। एंड और उल्टी तरफ देखूँ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वाइल्स्ट एफएमजी ने नंबर नहीं दिया, जो मेरा एस्टिमेट है, पहली बार 5 साल में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब सब्सिडी पे खर्चा डबल डिजिट में आ रहा है। लास्ट 4-5 साल का एवरेज रहा है 5-6% का। उसके साथ ही साथ अगर आप ये मिडिल क्लास का टैक्स कट ले लें, जो मेरे अनुमान से करीबन 2 करोड़ इंडियंस को बेनिफिट करेगा, ये एक डायरेक्शनली डिफरेंट बजट है, बिल्कुल ही डायरेक्शनली डिफरेंट बजट है टू व्हाट वी हैव सीन फ्रॉम FY 21, 22, 23, 24। एंड कुछ हद तक मेरे ख्याल से ये बजट जून 2024 के जनरल इलेक्शन का
नतीजा है। ये डिसाइसिव चेंज है इंडिया के रवैये में। आई थिंक कैपेक्स का पूरा जो थीम था वो आई थिंक डी एम्फेसाइज किया जा रहा है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्रो पुअर, प्रो एसएमई और प्रो मिडिल क्लास, राइट। सो काफ़ी डिसाइसिव बजट है, मेरे ख्याल से गेम चेंजिंग बजट है। मार्केट के स्टॉक मार्केट के डायरेक्शन में शायद उतना अंतर ना आए कल सुबह या आज मार्केट के डायरेक्शन में शायद अंतर ना आए, बट पूरा जो कैपेक्स का थीम था, स्पेशली पीएसयू कैपेक्स का थीम था, सरकारी कैपेक्स का थीम था, वो आई थिंक काफ़ी हद तक अभी ठंडा हो जाएगा। सुनील जी, एग्जैक्टली ये प्रश्न और आज लाजमी हो जाता है। 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं, ये एक ऐसे स्पेस जब जो कि 4 महीने से सबसे ज़्यादा प्राइस डैमेज झेल रहा था, एफएमसीजी। अभी आपके बात करते करते मैं देख रहा हूँ तो डे हाई पे, 3 महीने के हाई पे। इसको आप इन सर्कमस्टेंसेस में कैसे देख रहे हैं आप देखिएगा ना तो लास्ट साल भर में क्या क्या अपने हेडविंड्स थे। एक तो कंजम्पशन में ग्रोथ ही नहीं थी, दूसरा ऑब्वियसली लिक्विडिटी भी थोड़ी सी टाइट थी, और उसके रहते हुए भी बोथ केपेक्स एज वेल एज कंजम्पशन में थोड़ा सा इश्यू था, और ऑब्वियसली थर्ड था कि गवर्नमेंट का केपेक्स भी थोड़ा डिले हो गया इस टाइम। आई थिंक ये तीनों चीज अभी ठीक होगी, तो खाली कंजम्पशन को हम नहीं पकड़ते, बट अगर आप कंजम्पशन का सिर्फ लें तो अभी थोड़े दिन पहले आरबीआई ने 1.5 लाख करोड़ की लिक्विडिटी इन्फ्यूज की। आई थिंक उससे एक जो कंस्ट्रेंट था लिक्विडिटी का और फ्रेश लेंडिंग का, वो थोड़ा ईज होगा। और आज जो ये 70-80 हजार रुपए का जो एक बेनिफिट हुआ है टैक्स में टू इंडिविजुअल इंडियन, आई थिंक उससे थोड़ा बहुत ऑब्वियसली कंजम्पशन में ही जाता है पैसा वो, और सब्सटैंशियल है। लाइक 12 लाख में 80 हजार रुपया अगर किसी का बचता है तो बेसिकली वो पूरा का पूरा उनके लिए एक नेट इनकम है। और उसको देखते हुए आई थिंक थोड़े से स्टॉक्स में ऑटो हो या कंजम्पशन हो या थोड़ा रियल एस्टेट हो, उसमें बहुत लॉजिकली एक अपमूव है। बट खाली टैक्सेशन के वजह से ऐसा नहीं है कि ये इसका पूरा सेक्टर 20-30% बढ़ सकता है। हाँ, थोड़ा बहुत एक रैली एक्सपेक्टेड थी, वो है। But as I said, at the margin for consumption as well as for capex, दोनों जो एक बोलते हैं ना जो प्रीडोमिनेंट व्हील्स है इंडियन इकोनॉमी के, आई थिंक दोनों को एक अच्छा बूस्ट मिला है। बिल्कुल। मीनवाइल एक बार आप जरा 3-4 इंडेक्स देखिए, और नीलेश भाई को भी रखिएगा और पूरे पैनल को रखिएगा हमारे स्क्रीन पर। गुरमीत आपके पास भी आ रहा हूँ 1 मिनट में। देखिए जरा आप एक बार मारुति का चार्ट, आप जरा एक बार देखिए। आज सुबह हमारी बात हो रही थी वीरू मारुति पर। आप देखिए एक बार टीवीएस मोटर का चार्ट, आप देखिए एक बार जुबिलेंट फूडवर्क का चार्ट, और आप देखिए एक बार ट्रेंट का चार्ट। और ये सारे के सारे स्टॉक्स लगातार एक के बाद एक दनादन। नीलेश भाई, वीकेंड पे क्या प्लान है? ये जो टैक्स बचाएंगे इससे क्या, कहाँ पे खर्चा करेंगे? अनुज भाई, आपने तो दुखती रख पे हाथ रख दिया। मैं 100 रुपए कमाता हूँ, 40 रुपए सरकार टैक्स में लेके जाती है। थोड़ी बहुत बचत जरूर होगी इस बजट से। 20 रुपया एनपीएस और ईपीएफओ में डाल देता हूँ। 20 रुपया स्कीम इन द गेम सर्कुलर के तहत अपनी सारी स्कीम में इन्वेस्ट करता हूँ। बाकी 20 रुपए मेरी बीवी को दे देता हूँ, तो मेरी जेब में तो पैसा नहीं है। अच्छा सुनील जी, आपके पास तो ये दिक्कत नहीं है, ये म्यूचुअल फंड मैनेजर्स को स्किन इन द गेम में अपने फंड में डालना है, तो आप क्या करेंगे इस धनराशि का? एक और प्रॉपर्टी लेंगे क्या? अनुज, क्या है ना, नीलेश भाई जो बोले वो सर आंखों पर, अब बट वो 20 रुपया खर्चा नहीं कर रहे हैं, वो तो फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं ना। तो अगर सब इन्वेस्टर को बोलते हैं कि हमारे यहाँ में इन्वेस्ट करो, हम आपको वेल्थ क्रिएट करके देंगे, तो खुद की भी तो वेल्थ क्रिएट हो ही रही है। और नीलेश भाई ने आज तक चाय नहीं पिलाई, तो उनका खर्चा है। अरे आप लोग स्टूडियो आ जाइए, चाय क्या, हम सबसे शानदार चाय ब्रेकफास्ट सब रेडी है यहाँ पर। हर बार बोलते हो, हर बार आशा में आते हैं। अरे सुनील जी देखिए, ये इसमें फिर मेरा मुंह मत खुलवाइए। आपको पता है कि जो हमारी और आपकी लास्ट कॉन्वर्सेशन हुई थी वो आपकी तरफ से पेंडिंग है, मेरी तरफ से नहीं है वो। आप अच्छा है, सबका पैसा बच रहा है, तो हम भी आपकी टांग खींच रहे हैं। नहीं, बिल्कुल मोस्ट वेलकम सर। सुनील सर क्या खरीदें फिर? अब आप कहाँ पैसा लगाएंगे एक्स्ट्रा अब जो इस बजट के बाद? देखो अनुज, फ्रैंकली लास्ट 25-30 साल से मैं देख रहा हूँ, सिर्फ बजट को देख के आई डोंट थिंक कोई अपना व्यू चेंज करता है पर्टिकुलर। ऑब्वियसली थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, बट इट्स द सेम थिंग। जैसा मैंने कहा, इंडिया इज अ ग्रोथ इकोनॉमी। आई थिंक जब तक ग्रोथ नहीं आएगा तब तक इन्वेस्टर यहाँ आएगा भी नहीं बाहर से, और ना यहाँ बड़ा पैसा बनेगा। आई थिंक द गुड थिंग इज दैट ये बजट ने ग्रोथ एटलीस्ट ऑन द फेस ऑफ इट एड्रेस किया है। अभी भी फाइन प्रिंट देखना बाकी है,
अनेक्चर ए और बी, जिसका रेफरेंस फाइनेंस मिनिस्टर ने काफी बार किया, वो देखना बाकी है। बट एट द मार्जिन जो एक थोड़ी सी एनिमल स्पिरिट मिसिंग थी इन टर्म्स ऑफ पीपल स्पेंडिंग एंड केपेक्स हैपनिंग, होपफुली ये अगर एनिमल स्पिरिट्स इग्नाइट हो जाती है तो आई थिंक एनी गुड डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो विल डू वेल। शरद जी, आपकी प्रतिक्रिया पहली, और ये सर ये क्या 12 लाख में कैपिटल गेन भी इंक्लूडेड है ना? थोड़ा सा क्लैरिफाई करेंगे। नहीं, 12 लाख में जो स्पेशल रेट पे होता है वो इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि कैपिटल गेन पे स्पेशल रेट्स होते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको पता होगा कि 12.5% पे होता है, शॉर्ट टर्म 20% पे होता है, वो इसमें इंक्लूडेड नहीं होता है। 12 लाख तक अब आपकी सेक्शन 87A के अंतर्गत ये होगी, अभी फाइन प्रिंट देखना है, पर मुझे पूरा यकीन है कि 87A, आपको पता होगा पहले जो 7 लाख था वो सेक्शन 87A का रिबेट मिलता था 25,000 का, उसी रिबेट के सहारे ये 12 लाख कर दिया गया। तो इसमें समझने वाली बात यह है कि जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है वो तो 3 लाख से 4 लाख हो गई है, पर सेक्शन 87A के अंतर्गत आपको 4 लाख से 12 लाख तक का अब रिबेट मिलेगा। और कुछ और चीज़ें हम ध्यान से देखें अगर इसमें, सीनियर सिटीजन्स के लिए बड़ा अच्छा आया है। सिटीजन को टीडीएस की बड़ी सरदर्दी होती थी, 50,000 जैसे ऊपर इंटरेस्ट मिलता था टीडीएस कट जाता था, अब वो 1 लाख तक हो गया है। और रेंट पर टीडीएस में बहुत फ़ायदा हुआ है, रेंट पर अब 6 लाख तक का टीडीएस नहीं कटेगा जो लोग रेंट पे करते हैं, जो रेंट रिसीव करते हैं। दूसरा, बहुत बड़ी मात्रा में लोग गलत रिटर्न फाइल कर देते थे या कुछ मिस कर जाते थे, या कई दफ़े कुछ लोग शरारत से छोड़ भी देते थे, तो वो अपडेटेड रिटर्न सेक्शन 139(8)A है एक इनकम टैक्स में, जो पिछली बार लाया गया था, उसके अंतर्गत अब आप 4 साल तक पिछले की गलती सुधार सकते हैं। तो ये एक बहुत वेलकम स्टेप है, क्योंकि इससे संबंधित CNBC आवाज़ पर भी जो आप टैक्स गुरु शो आता है उसमें बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, यानी कि आपके पास अगर 2 घर हैं और आप सेल्फ ऑक्यूपाइड रखना चाहते हैं, पहले एक ही आपको अलाउड था, अब दूसरा अगर खाली घर रहता था सेल्फ ऑक्यूपाइड तो आपको एक नोशनल रेंट का ऐड होता था आपकी इनकम में, अब वो 2 लाख तक कर दिया गया है। और मैं समझता हूँ पर्सनल इनकम टैक्स में बड़ा चेंज है, क्योंकि 7 लाख से बढ़ा के 12 लाख तक कोई टैक्स, मतलब 1 लाख रुपए महीना तक आप कमाते हैं तो आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं। और उससे भी बड़ा चेंज मुझे लग रहा है जो ये स्लैब रेट्स चेंज हुए हैं, और स्लैब रेट्स का पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो गया। पहले 3, 6, 9, 12, 15 था, अब ये 4, 8, 12, 16, 20, 24 इस तरीके से कर दिया गया है। तो मुझे लग रहा है कि ओवरऑल, हालांकि मैं अभी चार्ट पे वर्क कर रहा हूं, मैं और मेरी टीम वर्क कर रही है क्योंकि मैं स्टूडियो में हूं, अभी हम चार्ट सामने लाएंगे कि कितना फर्क पड़ेगा अलग अलग लेवल्स के इनकम पर, एक्चुअली टैक्स सेविंग कितनी होगी। मेरा अनुमान है कि करीब करीब आपको 40,000 से 1 लाख रुपए तक की, जो कि बहुत बड़ी है। और मैं समझता हूँ अक्रॉस द बोर्ड इसका स्टॉक मार्केट्स पे असर पड़ेगा। ये सब खर्च करने वाले हैं लोग, थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर देंगे, SIP कर देंगे, अलग बात है, पर ज़्यादातर लोगों के खर्चे रुके हुए थे महंगाई की वजह से और कारणों से। तो मुझे लगता है सारा पैसा ये मार्केट में अल्टीमेटली आएगा, ये पर्कुलेट होगा पैसा सारे सेक्टर्स में, सारा पैसा पर्कुलेट होगा। ये बात बिल्कुल सही है। शरद जी बिल्कुल उस वर्किंग पर आइए और उसके बाद आपसे तो और डिटेल में भी लेंगे। गुरमीत, मार्केट क्यों नहीं चल रहा है फिर? निफ्टी क्यों अभी भी 70 पॉइंट नीचे, मिड कैप अभी भी नीचे, क्या मार्केट को पसंद नहीं आ रहा फिर? अनुज, मुझे लगता है कैपिटल एक्सपेंडिचर पार्ट पसंद नहीं आया, क्योंकि कहीं ना कहीं बजट बहुत अच्छा था, पर फिस्कल डेफिसिट आपने जो 4.9 का 4.8 किया या 4.5 का 4.4 किया, वो अगर नहीं भी करते और थोड़ा कैपेक्स बढ़ा देते, बट ठीक है, वो एक बात है, आई थिंक वो रीप्राइस करेगा। अब तो जो थीम्स चल रही थी, रेलवे, डिफेंस, सीमेंट, हाँ नहीं ऐसा नहीं है, मुझे लगता है थोड़ा सा रीबैलेंसिंग होगा। और कैपेक्स में भी रूरल स्पेंडिंग पे फोकस है। दूसरा, गवर्नमेंट ने एक चीज़ रियलाइज करी अनुज कि अगर 8% सस्टेनेबल ग्रोथ है तो सारी हैवी लिफ्टिंग गवर्नमेंट नहीं कर सकती, प्राइवेट कैपेक्स पे होना पड़ेगा। प्राइवेट कैपेक्स जब होगा जब डिमांड आएगी, तो चिकन एग है। तो मुझे लगता है वो ब्रॉडर कंजम्पशन रिवाइवल से प्राइवेट कैपेक्स की कोशिश कर रहे हैं और टैक्स रिलीफ से कंजम्पशन बढ़ा रहे हैं, तो उस हिसाब से इसलिए थोड़ा सा मुझे लगता है रीप्राइसिंग होगी थोड़ी सी। बट इसलिए अनुज हम कहते हैं ना, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। हमने IT को राइट ऑफ कर दिया था, हमने अभी FMCG को राइट ऑफ कर दिया था, और यही इन्वेस्टर्स को समझना चाहिए कि रोटेशन होता है मार्केट में, इसलिए डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। ओके, चलिए एक मुझे ना क्योंकि हमको काफ़ी व्यूज़ इकट्ठे करने हैं हमारे बाकी के दिन के लिए भी, मैं कुछ और चीज़ों पर बात करना चाहता हूँ। नीलेश भाई, अब आपने स्पेंड किया होगा पिछला आधा घंटा ये बजट एनालाइज करने में, इवेंचुअली अब इस बजट को आप कैसे रेट करेंगे और यहाँ से एक आम इन्वेस्टर क्या करे? तो एक चीज जो इस बजट में हमें बहुत पसंद आई वो सेंट्रल KYC है। अनुज भाई, KYC के बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस हैं और उस वजह से कई बार नए निवेशकों को मार्केट में लाने के लिए तकलीफ हो रही थी। तो ये सेंट्रल KYC अगर होगा तो मेरे हिसाब से इससे फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स में बहुत फायदा होगा।
दूसरी चीज अनुज भाई, एक फोकस है नई जगह पे जाने की। फॉर एग्जाम्पल 10 साल पहले हम लोग खिलौने इंपोर्ट ज्यादा करते थे, एक्सपोर्ट कम करते थे। धीरे 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 करके हम नेट एक्सपोर्टर ऑफ खिलौने बन गए। बट अब इस बजट में कह रहे हैं कि हम खिलौने में ग्लोबल ब्रांड बनाना चाहते हैं। चप्पल, फुटवेयर, जूते, ये तो मतलब कोई बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग चीज नहीं है। अब इस बजट में फोकस है कि कैसे हम क्लस्टर मैन्युफैक्चरिंग करें, कैसे हम स्किल सेट डेवलप करें, और जूते, फुटवेयर जैसे सिंपल, जहां पे लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, उसे बढ़ावा दे पाए। सेम चीज डीप टेक में निवेश के लिए है, तो तकरीबन 20,000 करोड़ का फंड उसके लिए खड़ा किया गया है। न्यूक्लियर एनर्जी के लिए 20,000 करोड़ स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के लिए दिए गए हैं। तो कुछ हद तक ऐसा कह सकते हैं इस बजट में नई दिशा में जाने का प्रयास है, चाहे वो टॉयज हो, चाहे फुटवेयर हो, चाहे स्मॉल न्यूक्लियर मॉड्यूलर रिएक्टर हो, चाहे डीप टेक हो। तो ये सारी चीजें होपफुली अगर अच्छी तरह से एग्जीक्यूट करे तो देश के लिए बहुत अच्छी होगी। अच्छा, इस बीच निफ्टी है वो डेढ़ों पर आ रहा है, बट सुनील जी कभी कभी क्या होता है ना, कुछ इवेंट, कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो अभी गुरमीत जी ने कहा कि वो आपको सेक्टोरियल रोटेशन के लिए प्रेरित करती हैं। क्या आज के बजट के बाद थोड़ा झुकाव आपका एफएमसीजी पर, और आप थोड़े से आज की इस घटना के बाद कैपिटल गुड्स को लेकर और सीमेंट को लेकर थोड़े से कॉशियस रहेंगे? आई थिंक कंजम्पशन, जैसा मैंने पहले कहा था, लास्ट 1 साल में थोड़ा सा वीक था, और ऐसे भी बजट के पहले भी हमारा व्यू था कि कंजम्पशन अगले साल भर के लिए, 2 साल के लिए काफी ठीक लग रहा है। मानसून्स बहुत अच्छे रहे हैं, रूरल इनकम अच्छी है, और थोड़ा सा एक लेटेंट डिमांड भी है। आई थिंक बजट से उसको थोड़ा सा और बूस्ट मिलेगा। तो हाँ, कंजम्पशन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम थोड़ा सा आई थिंक पोर्टफोलियो में अगर होगा तो अच्छा ही होगा, लेकिन हमारा थोड़ा सा वैल्यू की तरफ झुकाव है। तो काफी कंजम्पशन स्टॉक्स काफी महंगे हैं, बढ़ने के पहले भी महंगे थे, और आज 2-3% और हैं। तो आई थिंक दैट्स वाई हमारा थोड़ा सा झुकाव डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन पे ज्यादा रहता है, स्टेपल्स पे थोड़ा कम रहता है। केपेक्स, जैसा मैंने कहा, इंडिया हैज टू ग्रो। तो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, पावर हो, एयरपोर्ट हो, अक्रॉस एग्रीकल्चरल इंफ्रा हो, वाटर इंफ्रा हो, आई थिंक वी कैन नॉट लिव विदाउट इंफ्रा एंड केपेक्स। तो आई थिंक उसमें हमारा व्यू पहले भी पॉजिटिव था, अभी भी पॉजिटिव है, और बजट ने ऐसा कुछ नहीं किया कि जिससे हमारा व्यू में कुछ चेंज आए। ऑब्वियसली इस साल कैपिटल एक्सपेंडिचर का क्या एलोकेशन है वो अभी तक पता नहीं है, वो देखना अभी भी बाकी है। बट ऐसा स्पीच को सुन के इट इज ओनली पॉजिटिव, नॉट नेगेटिव। ये सीएनबीसी आवाज़ इस समय नंबर 1 चैनल है यूट्यूब पर। मैं फिर बार बार रिपीट कर रहा हूँ, और हमारे साथ बेस्ट पैनल भी अवेलेबल है। नीलेश भाई और सुनील जी, आप दोनों से मैं एक एक सवाल अब लेना चाहता हूँ इस मुद्दे पर। सुनील जी, अब हालांकि आपका व्यू हमेशा ही रहता है कि नियर टर्म मार्केट मूवमेंट्स पे मत जाइए, लेकिन क्या बाजार ने जो पेन झेली है पिछले 5-6 महीने की, उसके अंत होने के कुछ साइंस हैं? क्या ये बजट उसको मार्क करेगा? जो लोज हमने देखे थे, जो पेन हमने देखी थी, क्या वो अब हम पीछे छोड़ सकते हैं? मार्केट का ये नियम है, मार्केट विल ऑलवेज हैव दिस फेजेस, जहाँ पे थोड़ा सा ओवर वैल्यूएशन हो जाता है, थोड़ा सा अंडर वैल्यूएशन हो जाता है। कोई फेज ऐसा होता है जिसमें बहुत रिटर्न बन जाते हैं, कोई फेज ऐसा होता है जिसमें थोड़ा पेन भी देखना पड़ता है। आई थिंक लास्ट 2-3 साल में मार्केट्स बहुत ही अच्छे एक सॉर्ट ऑफ मूड में था। आई वुड से दैट काफी जगह वैल्यूएशन से ज्यादा प्राइस में मूवमेंट आ गया था, और हमने जो ये लास्ट जून जुलाई से लेके अब तक जो देखा है, लास्ट में भी सितंबर में पीक बनाया था, बट जून जुलाई से लेके आज तक जो 6 महीने हुए हैं उसमें काफी चैलेंजेस आई, और प्रीडोमिनेंट चैलेंज थी कि अपना ग्रोथ जीडीपी का भी और कॉर्पोरेट प्रॉफिट का भी, उसमें बहुत स्लो डाउन हुआ, और शेयर सस्ते नहीं थे, इसके लिए आपको करेक्शन देखने मिला। आई थिंक बीच बीच में करेक्शन आना जरूरी भी है, थोड़ा एक रियलिटी चेक भी हो जाता है। एज वी स्पीक टुडे मुझे नहीं लगता है कि मार्केट बहुत ज्यादा नीचे जाने की जगह है, बट एट द सेम टाइम वैल्यूएशंस पहले के मुकाबले ठीक है, लेकिन अभी भी एकदम कंपेलिंग नहीं है। तो आई थिंक ये साल थोड़ा सा एक चैलेंजिंग रहने वाला है, और अगर हमें लगता है कि अगर ये साल में हमने अगर लो डबल डिजिट रिटर्न भी बना लिए तो इट विल बी अ ग्रेट ईयर। और आई थिंक उसको ये बजट ने उसको थोड़ा सा और कॉन्क्रीट कर दिया है। लगता है कि लो डबल डिजिट रिटर्न इस साल भी
बन सकते हैं, बट अगर उससे ज्यादा की आपकी उम्मीद है तो देन वी विल हैव टू हैव मेनी मोर पॉजिटिव्स व्हिच विल हैव टू कम। नीलेश भाई, सेम सवाल आपसे, क्या मार्केट में एक तो वर्स्ट इज ओवर एंड दूसरा किस तरीके के रिटर्न की एक्सपेक्टेशंस रखें? तो अनुज भाई, कैपेक्स के नंबर आए हैं, ऑब्वियसली व्हाट्सएप पे आए हैं, तो कितना सच है कितना झूठ है पता नहीं, बट रफली 10.18 लाख करोड़ इस साल के सामने अगले साल 11.21 लाख का बजटेड कैपेक्स है, 10% ग्रोथ। और एक इफेक्टिव कैपेक्स उन्होंने दिया है नंबर 13.2 लाख करोड़ से 15.5 लाख करोड़, दैट इज अ 17% इंक्रीज। तो बिटवीन पीएसयू एंड गवर्नमेंट तकरीबन 15.5 लाख करोड़ का कैपेक्स होगा अगले साल, विच विल बी 17% जंप। एंड यस, पिछले 1-2 महीने में कचरे स्टॉक की पिटाई ज्यादा हुई है, बट जो अच्छे स्टॉक है वो तकरीबन 10-12% गिरे हैं। तो 10-12% करेक्शन को तो आपको मानना ही पड़ेगा कि जायज है, मार्केट में उतार चढ़ाव आते रहेंगे। आप भारत की ग्रोथ स्टोरी में निवेश कर रहे हैं, 1 साल का व्यू लेके मत निवेश करिए। पिछले 5 साल का रिटर्न 20-22% के आसपास है, तो जाहिर है कि आने वाले समय में आपको रिटर्न की एक्सपेक्टेशन मॉडरेट करनी पड़ेगी। और जैसा सुनील ने कहा कि अगर आप लो डबल डिजिट रिटर्न देख रहे हैं, हाई सिंगल डिजिट रिटर्न देख रहे हैं, जो महंगाई से फिर भी रियल रिटर्न देगा, तब जाके निवेश करना चाहिए। सुनील जी, तो कौन कौन से मिस्टेक अवॉइड करनी है यहाँ से? हम रिटेल निवेशकों को क्या नहीं खरीदना है? कई बार ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्या खरीदना है तो सब पूछते हैं। अनुज, क्या हुआ है ना, लास्ट साल 2 साल में नैरेटिव स्टॉक्स और सेक्टर्स में बहुत पैसा गया है। नैरेटिव का मतलब ये है कि आप कोई वैल्यूएशन देखते नहीं हो, थीम आपको अच्छी लगी, ईएमएस थीम अच्छी लगी, रेलवे अच्छी लगी, डिफेंस अच्छी लगी, तो आपने बिना रिसर्च किए हर कंपनी के में डाल दिया जो उस सेक्टर में एग्जिस्ट करती थी। तो उसमें बढ़ता भी वैसे ही है, घटता भी वैसे ही है। तो जैसा नीलेश भाई ने कहा ना, आई थिंक लॉट ऑफ डैमेजेस हैपेंड टू कंपनी जहां पे या तो फंडामेंटल नहीं थे, या तो प्राइस बहुत ज्यादा फंडामेंटल को डिस्काउंट किए बिना बढ़ रहे थे। आई थिंक एज वी स्पीक अभी भी मैं देखता हूं ना, बहुत लोग मैसेज भेजते हैं कि ये शेयर इतने % से गिर गया, इसके लो। तो जस्ट बिकॉज द स्टॉक इज फॉलन बाय अ पर्टिकुलर %, इट डज नॉट बिकम अ बाय। आई थिंक अभी भी, जैसे मैंने कहा, इट इज नॉट गोइंग टू बी अ वन वे मार्केट, एटलीस्ट एज पर अस। तो कोई भी चीज जल्दी में मत करिए, आप सोच समझ के करके करिए। ऐसे भी एटलीस्ट आर व्यू इज दैट इन दिस ईयर लो टू मे बी मिड टीन रिटर्न्स वुड बी अ ग्रेट रिटर्न्स। तो जल्दी मत करिए कोई चीज। लो टू मिड टीन रिटर्न्स वुड बी ग्रेट रिटर्न्स। सौरभ, एक नजर जा रही है मेरी, जोमेटो, स्विगी, ये सब स्टॉक्स भाग रहे हैं। मतलब अब ऑब्वियसली 12 लाख तक टैक्स, और सबसे ज़्यादा एक्चुअली जो लोअर स्ट्रेटा है वो आजकल इनको यूज़ करने लगा है, ब्लिंकिट, जोमेटो, सबको। क्या ये एक फ्रेश री रेटिंग कैंडिडेट होगा इन स्टॉक्स के लिए? स्विगी जोमेटो का तो ये भी वजह है कि वो गिग वर्कर्स को हेल्थ केयर स्कीम में पीएम जन आरोग्य में खींच लिया गया। बट आई थिंक ओवरऑल जो थीम आपने सही पकड़ा है, मेरे ख्याल से मार्केट में कशमकश चल रही है, विच इज़ वाई आप देख रहे हो इंडेक्स नीचे जा रही है। करीबन 60% स्टॉक मार्केट कैपेक्स से जुड़ा हुआ है किसी तरीके से, राइट? बिल्कुल। करीबन 30-40% एक्सपोर्ट्स और कंजम्पशन वाली स्टोरी है। तो देयरफॉर जो प्रीडोमिनेंट मार्केट है वो नीचे खींच रही है। कंजम्पशन के लिए तो बजट में दो राय नहीं है। प्रो कंजम्पशन बजट है, प्रो पुअर भी बोलूँगा मैं इसको, और प्रो एसएमई भी बोलूँगा। वो वाली पूरी थीम जो लास्ट 2-3 साल थोड़ी सहमी हुई थी, कंजम्पशन की स्टोरी, कैपेक्स की स्टोरी में काफ़ी प्रोत्साहन था, काफ़ी जोश था। आई थिंक वहाँ पे थीम में चेंज आएगा। बट ओवरऑल अगर हम देखें अर्निंग्स ग्रोथ और जीडीपी ग्रोथ का पिक्चर अभी भी शायद और एक साल थोड़ा ठंडा रहेगा। टिपिकली इंडिया में इकोनॉमी 3 साल अच्छा करती है, फिर 1-1.5 साल ब्रीदर लेती है। तो आई थिंक वी हैव बिगन दैट ब्रीदर पीरियड, और 2-3 क्वार्टर ऐसे ब्रीदर चलेगा जहाँ पे जीडीपी और अर्निंग्स ग्रोथ थोड़ा ठंडा रहेगा। उसको मद्देनजर रखते हुए जो वैल्यूएशंस है अभी भी थोड़े रिच हैं, तो मैं बोलूँगा ओवरऑल मार्केट में शायद उतना जोश ना आए। बट ये बात में मेरे ख्याल दिमाग में काफ़ी क्लैरिटी बन रही है, मोर आई लुक एट द बजट, कि एक डायरेक्शनल चेंज है इन द कॉम्पोजिशन ऑफ विनर्स इन दिस मार्केट, अवे फ्रॉम द कैपेक्स थीम। कैपेक्स थीम को पीछे छोड़ के हम कंजम्पशन थीम के आगे बढ़ रहे हैं। नीलेश भाई, एक सवाल, एक थीम थी जिस पर आपकी मेरी कई बार बात भी हुई है पोस्ट बजट, रियल एस्टेट एंसिलरी स्पेस, होम इम्प्रूवमेंट। यहाँ पे स्लो डाउन, यहाँ पे जो प्राइस डैमेजेस हुए हैं स्टॉक्स में वो सब्सटेंशियल हुए हैं। कहीं कहीं तो आधा भी हो गए हैं स्टॉक्स। क्या वजह है इसकी, आप मानते हैं?
क्या जो ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड प्रोजेक्ट्स हैं वो कंप्लीट, मतलब प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं, नए प्रोजेक्ट्स का अभी कमी अभाव है? एग्जैक्टली ये स्पेस, ये थीम आपको लग कैसे रही है इस प्राइस पे? रियल एस्टेट में एक चीज हुई है कि प्राइसेस काफी बढ़ गई है और अब सुनने में आ रहा है कि लोग खरीदारी करने में संकोच कर रहे हैं। दूसरी चीज, ब्याज की दरें बढ़ी है, तो हाउसिंग लोन जो कभी 7-7.5% था, आज 8.5-9% के आसपास पहुंच गया है। तो ब्याज के दरों की ईएमआई की बर्डन भी हाउसिंग परचेज में दिख रही है। तीसरी चीज शायद ये हो रही है कि लोगों का खर्चा अलग हो रहा है। अगर आप 1.5 लाख रुपए का एप्पल का आईफोन खरीदेंगे तो जाहिर है आपको कहीं ना कहीं तो कटौती करनी पड़ेगी। वह कटौती हो सकता है पेंटिंग में, पेंट्स में हो रही है, टाइल्स में हो रही है, या बिल्डिंग मटेरियल्स में हो रही है। तो ये सारी चीजें मिला के रियल एस्टेट सेक्टर में एक सबड्यूडनेस, एक सॉफ्टनेस लाती हुई दिख रही है। आई थिंक रियल एस्टेट सेक्टर को अगर हमें यहाँ से बढ़ावा देना है तो कहीं जो एक बिजनेस मॉडल ऐसा है, रुमाल डाल दीजिए और धीरे धीरे प्रोजेक्ट को खड़ा करते रहिए, स्केर्सिटी ऑफ रियल एस्टेट करके प्राइस रियलाइजेशन या रिटर्न ऑन इक्विटी बनाइए, वहां से फैक्ट्री मॉडल पे जाना पड़ेगा। 3 साल की जगह या 5 साल की जगह में बिल्डिंग बनाए, उससे अच्छा 12-18 महीने में बिल्डिंग बना के कैसे रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ा सके। जितनी कम कीमत करेंगे, प्राइस कम करेंगे, शायद उतना ही बेनिफिट रियल एस्टेट सेक्टर को मिलेगा। बिल्कुल। गुरमीत, अब यहाँ से आगे क्या, अब मार्केट आगे क्या देखेगा? मतलब नेक्स्ट इमीडिएट ट्रिगर क्या है? पॉलिसी? हाँ, आरबीआई पॉलिसी अनुज, मुझे लगता है थोड़ा एफआईएस का रिएक्शन भी देखना होगा। आज सैटरडे है तो आज जो आप देख रहे हैं वो शायद ज़्यादातर डोमेस्टिक है। हाँ, बिल्कुल। तो मुझे लगता है ओवर द वीकेंड हमें तो समझना पड़ेगा कि जो केपेक्स का नंबर, एक नीलेश भाई ने अच्छा नंबर दिया कि पीएसयू प्लस जो केपेक्स है गवर्नमेंट का, वो 15-16 लाख करोड़ प्लस स्टेट गवर्नमेंट के साथ कुछ पार्टनरशिप की बात करी है। एक जो मुझे अभी फाइन प्रिंट मैंने देखा, जो गवर्नमेंट ने एक 2030 का एक दिया है कि डेट टू जीडीपी 50% हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ा है। अब ये लगभग 80% के आसपास है। तो क्या ये फिस्कल डेफिसिट इसलिए पे कम किया है कि रेटिंग अपग्रेड चाहते हैं? कुछ जरूर बैक ऑफ द माइंड रहा होगा। और मैं सौरभ से अग्री करता हूँ, आपको पोर्टफोलियो का वेटेजेस चेंज करने पड़ेंगे। हम बहुत ज़्यादा केपेक्स, एनर्जी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर रिलेटेड हैवी रहे हैं और उन्हीं पोर्टफोलियो ने रिटर्न दिया है। ये साल कंजम्पशन का बॉटम अप आपको कंजम्पशन, और मैं डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन पे भी आऊँगा। जैसे टूरिज्म है, आप महाकुंभ देखिए अनुज, ये अपने आप में वर्ल्ड वाइड स्पेक्टिकल है। बिल्कुल। आप इंटरग्लोब, मतलब मैं कह रहा हूँ कि जो ओवरऑल एक्सपेंडिचर है अर्बन का, उसका कंजम्पशन बास्केट चेंज हुआ है। डिजिटल कंजम्पशन पे ध्यान देना पड़ेगा, टूर्स एंड ट्रैवल्स पे ध्यान देना पड़ेगा। तो कंजम्पशन बास्केट बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी लाएगा, स्पेशली न्यू एज बिजनेसेस में और ट्रैवल टूरिज्म। सौरभ, आपके हिसाब से अब नेक्स्ट ट्रिगर टू वॉच और किन तरीके के स्टॉक्स पर अब ध्यान दें? आई थिंक आरबीआई पॉलिसी, ये जो कंसोलिडेशन हुई है इससे आरबीआई को रेट कट आएगा? रेट कट का आई थिंक रूम ज़रूर बनता है इसी पॉलिसी में या मेरे ख्याल से इसी पॉलिसी में रेट कट आएगा। Okay. इस प्रकार का कंसोलिडेशन विच इज़ आई थिंक कंसोलिडेशन मार्केट के एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा है। इकोनॉमी को रेट कट की ज़रूरत है एंड आरबीआई के पास आई थिंक अब कोई रीज़न ना रहा। अगर सरकार कंसोलिडेट नहीं करती, आरबीआई के लिए रेट कट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता, गिवन दैट रुपीज़ अंडर प्रेशर। इस कंसोलिडेशन के बाद आई थिंक आरबीआई के लिए केस स्ट्रॉन्गर बनता है कि रेट कटिंग साइकिल शुरू कर दी जाए। सौरभ जी, गुरमीत जी, थोड़ा सा आपको विराम देता हूँ। थोड़ा सा आई थिंक काफ़ी समय से आप हमारे साथ हैं, थोड़ा चाय पर, कॉफ़ी पर थोड़ा ध्यान दीजिए। थोड़ा और गेस्ट भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं। एमके वेंचर्स के मधु केला भी हमारे साथ जुड़े हैं। मधु सर, गुड आफ्टरनून। मैंने सुना आप दुबई में हैं, आज बजट वाले दिन दुबई पहुँच गए, लेकिन वहाँ से भी जुड़े हमारे साथ, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू अनुज। बहुत ही क्लोज फ्रेंड का बर्थडे है and could not have been postponed. First time in 34 years that I am not there on the budget day in Mumbai. ये पता क्या होता है, जब मेरे बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे होता है ना, मैं सोचता हूँ कि वो ट्रैफिक बीट करके JVLR क्रॉस करके जाऊँ या ना जाऊँ। मधु सर के फ्रेंड का बर्थडे तो चलिए दुबई चलते हैं। मधु सर, कैसा लगा बजट? मार्केट ने कंजम्पशन में तो एक बजूका मिल गया, इनकम टैक्स 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं, लेकिन कैपेक्स के नंबर ने शायद थोड़ा डिसअपॉइंट किया। आपने कैसे पढ़ा बजट को? अनुज, पहला है कि बियॉन्ड एनीवन्स एक्सपेक्टेशन है ये 12 लाख का नंबर, एंड ये बहुत जरूरी था टू बूस्ट अप द कंजम्पशन, टू गेट द सेंटिमेंट्स बैक, एंड आई थिंक वेरी गुड स्टेप। सी, कैपेक्स का नंबर अगर हम एक्चुअल जो अचीव होगा वो 10.2 लाख के सामने अगर 11.2 लाख है तो 10% का इजाफा है, जो खराब नहीं है।
इट कुड हैव बीन बेटर बट खराब नहीं है। अनुज, मेरे हिसाब से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये बजट ने डिलीवर किया है वो है डायरेक्शन टू कंप्लायंस एंड रेगुलेशन। सीए इंडिया में बहुत बड़ा परेशानी का विषय रहा है, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स, टैक्स एम्बिग्विटी, जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर ने बहुत कैटेगरिकली बोला दैट इन द न्यू टैक्स बिल जो वो प्रपोज करने वाली है अगले वीक में, वहां पे काफी एम्फेसिस होगा टू मेक श्योर द टैक्सेशन लॉज आर क्लीन एंड देयर इज नो रूम फॉर मिस इंटरप्रिटेशन। सो अनुज, ये बजट के नंबरों में बहुत ज्यादा मैनेवरेबिलिटी नहीं होती है, पर ये जो गवर्नमेंट का इंटेंट है कि डिरेगुलेट करना है, क्लीन करना है एंड एम्बिग्विटी हटानी है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को अच्छा करना है, वो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा पॉजिटिव है इस बजट का। अच्छा मधु जी, बिल्कुल जैसे कि आपने कहा कि ये बिल्कुल अप्रत्याशित था। इवन 12 तो हमने भी नहीं सोचा था कि 12 तक का कोई टैक्स ना हो, शायद ऐसी घोषणा ना हो। अब एक स्पेस एफएमसीजी जो बीते मेरे ख्याल से 5 महीने से काफ़ी दिक्कत में था, ये जो कंजम्पशन को पुश मिलेगा, इस पर आपका व्यू क्या है? सडनली आपको अपने पोर्टफोलियो में अपनी अप्रोच में थोड़ी तब्दीली करनी पड़ेगी, आप मानते हैं? वरिंदर, पक्का करनी पड़ेगी, बिकॉज अभी तक के जो मार्केट चल रहा था वो मेनली कैपेक्स और इन्वेस्टमेंट के ऊपर चल रहा था। अभी कंजम्पशन में मेरे हिसाब से लोगों का काफी अंडरवेट था, बिकॉज एफएमसीजी और ये कंपनियां लास्ट 2 साल से अंडर परफॉर्म कर रही थी। तो मुझे लगता है ये जो बजट में हुआ है, इसको कंजम्पशन को डेफिनेटली लेग अप मिलेगा और थोड़े पोर्टफोलियोज में रिशफल करना पड़ेगा टू इंक्लूड कंज्यूमर स्टॉक्स मोर एग्रेसिवली। नीलेश भाई, मैं आपके पास एक सवाल लेना चाहता हूं कि बहुत सारी थीम्स ऐसी थी जिस पे रिटेल ने बहुत पैसा लगाया, दाव भी खेला। बहुत सारे रिटेल हमारे साथ हमारे कॉलर शोज में वो प्रश्न भी पूछते हैं, हम पीएसयूज में गले तक भरे हुए हैं, बहुत बाइंग कर रखी है और पोस्ट जून वो पीएसयूज में प्राइस डैमेज काफ़ी हुए हैं। अभी आप पीएसयूज पे क्या व्यू रखते हैं नीलेश जी? आप रेलवे की थीम को देखिए, आप डिफेंस को देखिए, क्या व्यू शेयर करना चाहेंगे आप उनसे इस वक्त? पीएसयूज में वीरू भाई बॉटम अप देखना पड़ेगा। कुछ पीएसयूज ऐसे थे जहां पे फ्लोटिंग स्टॉक बहुत कम था और इसीलिए वैल्यूएशन अपने ही दूसरे लीडर पीएसयू से दुगने या 3 गुने हो गए थे। आपके शो पे कई बार हमने कहा था कि ऐसे इललिक्विड पीएसयूज में जहां पे मार्केट डिस्कवरी नहीं हो रही है प्राइस की, वहां पे निवेश मत करिए या सावधानी से निवेश करिए। मेरे हिसाब से पीएसयूज जहां पे फ्लोटिंग स्टॉक ज्यादा है और जहां पे मैनेजमेंट इफिशिएंसी दिख रही है, उसमें अभी भी निवेश करने का मौका है। बहुत सारे लार्ज पीएसयू बैंक है, डिफेंस रेलवे के पीएसयू कंपनीज है, पावर की पीएसयू कंपनीज है, वहां पे फ्लोट रीजनेबल है, वैल्यूएशन ठीक ठाक है, तो निवेश करने में कोई डर नहीं है। बट इललिक्विड पीएसयूज जहां पे वैल्यूएशन अपने लीडर से भी बहुत आगे है, वहां पे अभी भी सावधानी बरतिए। वहां पे जो करेक्शन हुआ है उसमें और भी गुंजाइश है नीचे जाने की। ओके, मधु भाई एक बात बताऊं, मैं वैसे एक चीज़ में देख रहा था मधु सर कि 85% इंडियंस जो हैं वो 12 लाख से कम सैलरी कमाते हैं। तो इस बजट ने सीधा 85% इंडियंस को एड्रेस किया है और इस बजट को उस हिसाब से देखना चाहिए। और अब ये 85% इंडियंस अगर जाएंगे और ज़्यादा कंज्यूम करेंगे और वाकई में डिस्पोजेबल इनकम में बहुत बड़ा जंप आने वाला है, तो पूरी की पूरी ये जो सप्लाई चेन है, पूरी की पूरी जो एफएमसीजी चेन है या डिलीवरी चेन है, क्यूएसआर है, रिटेल है, ऑटोज हैं, अगर ये सब चलेंगे तो मार्केट क्यों नहीं चलेगा? मार्केट चलेगा अनुज भाई, आई थिंक। पर मैं ये बोलना चाहूंगा अनुज, ये एक साइड ऑफ द स्टोरी है। दूसरी साइड जो टेक्निकल पोजीशन ऑफ द मार्केट है, विद द फॉरेनर्स कंटिन्यूअसली सेलिंग इन इंडिया एवरी डे, एंड प्लस इतने सारे जो इशुएंस है जो इस साल आए हैं और भी आने वाले हैं, एंड डेफिनेटली वैल्यूएशन, इन तीनों को मानते हुए मुझे लगता है ब्रॉड मार्केट अनुज इस साल रेंज बाउंड रहेंगे। पर चुनिंदा शेयर जो बॉटम अप अपने को खरीदना है, बिकॉज मार्केट इतने वॉलेटाइल है, बॉटम अप स्टॉक पिकिंग का ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी मार्केट देगा। क्योंकि जब लोग नर्वस हो जाते हैं तो आजकल स्टॉक 30, 40, 50% एक हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन के अंदर घट जाते हैं। सो
अपने रिसर्च करके एकदम तैयारी रखो, फेथ रखो कि मार्केट वॉलेटिलिटी में चांस देगा, और वो एंट्री करके मुझे लगता है बॉटम अप स्टॉक पिकिंग का मार्केट है ये पूरा साल, रादर देन बेटिंग ऑन द बिग बुल मार्केट विच वी हैव सीन इन द लास्ट 3-4 years. बैंक्स को आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं? आई मीन बैंक्स के साथ एक लिक्विडिटी का कंसर्न था जिसको आरबीआई ने कुछ हद तक एड्रेस किया, बाकी देखिए पॉलिसी में क्या होता है, बट जब लिक्विडिटी अच्छी होती है तो अल्टीमेटली एनबीएफसीज भी कंफर्ट में आती हैं, कंफर्ट होती हैं। और अभी हम देख रहे हैं कि गोल्ड प्राइसेस जो हैं वो आपकी गोल्ड फाइनेंस कंपनी को भी काफ़ी एक मजबूती दे रहे हैं। ये बैंक्स और एनबीएफसीज में आपका चुनाव क्या कह रहा है इस वक्त? क्या थोड़ा जिस अप्रोच पे आप कह रहे हैं ना, बात कर रहे हैं कि थोड़ा रिसर्च करके रखो कहाँ पैसा लगाना चाहिए, ये बैंक्स और वो एनबीएफसीज कैसे लग रही है इस वक्त आपको? मेरे लिए सबसे टॉप पिक्स यही सेक्टर है, बैंक्स और एनबीएफसी, बिकॉज लास्ट 2-3 साल में यहाँ पे पैसा नहीं बना है, स्टॉक्स यहीं पे सस्ते हैं, बहुत सारी अच्छी एनबीएफसी 1.2 टाइम बुक वैल्यू पे मिल रही है, एंड बैंक्स में लास्ट 2-3 साल में पैसा नहीं बना है। अच्छे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स अगर आप 2 साल का व्यू लेना चाहो तो 1.2-1.3 टाइम बुक वैल्यू पे मिल रहे हैं। सो मुझे लगता है अगर अपॉर्चुनिटी रियली कोई बड़े सेक्टर में है तो ये फाइनेंशियल स्पेस पे है, तो लास्ट 2-3 साल का अंडर परफॉर्मेंस और जो फाइनेंशियल स्पेस सिर्फ कैपिटल मार्केट रिलेटेड स्टॉक्स ने अच्छा किया था लास्ट 2-3 साल में, मुझे लगता है वो फोकस इस साल एनबीएफसी और बैंक्स में ज्यादा होगा, और वहीं पे जहाँ पे अगर वॉलेटिलिटी में अपने को चांस मिल जाए तो वो शेयर डेफिनेटली खरीदने चाहिए। सेक्टर्स हैं जहां अब मार्केट को इस डिसअपॉइंटमेंट जो डिसअपॉइंटिंग एस्पेक्ट्स हैं बजट के, वो उनका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। एक है कैपिटल गुड्स, कैपेक्स कम हो रहा है तो कैपिटल गुड्स स्टॉक्स नीचे हैं। एबीबी लेकर आइए आप जरा, एबीबी, कमेंस, सीमेंस, तो ये इंडेक्स कैपिटल गुड्स इंडेक्स अब सबसे ज़्यादा लॉसेस में ट्रेड कर रहा है। एबीबी इस समय एफ&ओ का टॉप लूजर है, करीब करीब 6% नीचे है। यही डर था मार्केट का, जो कैपिटल गुड्स स्टॉक्स थे उनको लेकर, इसको लेकर बहुत एक्सपेक्टेशन थी, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी थी इसकी वजह से। और दूसरा है ऑयल मार्केटिंग कंपनी, क्योंकि बजट में अब तक एटलीस्ट मुझे नहीं दिखा, अगर किया गया है नहीं पता नहीं, लेकिन वो एलपीजी लॉसेस को लेकर शायद कुछ रिलीफ की बात अब तक हुई नहीं है। नीलेश भाई, फिर ये 2 सेक्टर्स कैपिटल गुड्स और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, इनमें गिरावट में बाइंग की जाए या इनको अभी कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया जाए? कैपिटल गुड्स में अनुज भाई अगर इस बार देखे तो कोई खास अलोकेशन हुआ नहीं है इन दी मार्केट फेवरेट कैपिटल सेक्टर। रोड्स 2.58 ट्रिलियन का 2.6 ट्रिलियन हुआ, रेलवे सेम है 2.52 ट्रिलियन, और डिफेंस 1.59 का 1.80 ट्रिलियन हुआ। तो मेरे हिसाब से इस बजट का फोकस, जैसे मधु भाई और सौरभ ने बताया, वैसे इन्वेस्टमेंट से कंजम्पशन की तरफ बढ़ा है। तो मार्केट में भी हो सकता है कि लोगों का नजरिया, इन्वेस्टर्स का नजरिया कंजम्पशन स्टॉक्स पे ज्यादा रहे। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि हमें यही नहीं पता कि ये लोग अपने प्रोडक्ट कैसे प्राइस करते हैं। कल को उठ के सामने इलेक्शन हो और क्रूड के प्राइसेस दुनिया में बढ़ जाए किसी कारण से, तो यहाँ पे ये अपनी कॉस्ट के नीचे बेच के लॉस करेंगे या भाव बढ़ा के ऊपर में बेचेंगे और प्रॉफिट करेंगे। जब तक ये क्लैरिटी नहीं आती है तब तक आप ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को उतना वैल्यूएशन नहीं देंगे जितना देना चाहिए। और सरकार को अगर देखे तो जब क्रूड के दाम नीचे गिरते हैं तब ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को ऊपर के दाम में पेट्रोल डीजल बेचने देते हैं, पूरा लॉस कवर कर देते हैं। सो ऐसा नहीं है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की सर्वाइवल के ऊपर कोई डाउट है, बट बिकॉज हमें कोई कॉन्फिडेंस नहीं है इनकी